वेलकम टू StudyIQ। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लर्निंग 5 वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, डोंकीज ईयर्स। डोंकीज ईयर्स का अर्थ होता है वेरी लॉन्ग टाइम अगो। ये क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज डोंकीज आर सेड टू हैव बिग ईयर्स, लॉन्ग ईयर्स होते हैं, और इसीलिए ये जो फ्रेज है डोंकीज ईयर्स, इसका अर्थ होता है मैनी मून्स अगो। मैनी मून्स अगो इज ऑल्सो गुड यूसेज ऑफ फ्रेजेस। वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये डोंकीज ईयर्स का एग्जैक्ट मीनिंग हो जाता है। लेट्स लुक एट द यूसेज ऑफ द वर्ड। शी हैज बीन इन द सेम जॉब फॉर डोंकीज ईयर्स। दैट मीन्स बहुत सालों से वो उसी सेम जॉब के अंदर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, रू। रू का अर्थ होता है व्हेन यू आर रिग्रेटिंग समथिंग एंड यू वांट टू चेंज दैट थिंग। उसके लिए हम रू शब्द का प्रयोग करते हैं। जब आप रिग्रेट करते हैं, रिमोर्स एक्सप्रेस करते हैं, बिटरली रिग्रेट करते हैं और सोचते हैं कि काश वो चीज अनडन हो जाए, उसके लिए रू शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेट्स लुक एट द यूसेज। शी मस्ट बी रूइंग ओवर हर डिसीजन नाउ। आई रू द डे व्हेन आई अग्रीड टू द स्टूपिड प्लान। दैट मीन्स यू बिटरली रिग्रेट। आप बहुत ज्यादा रिग्रेटफुल हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रू: रिग्रेट, डिप्लोर, bemoan, repentance, grieve, bewail, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हो जाते हैं रू के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, टायरो। टायरो शब्द का अर्थ होता है अ नोवाइस, अ बिगिनर। एक ऐसा व्यक्ति जो कि नया है, नौसिखिया है, उसके लिए हम टायरो शब्द का प्रयोग करते हैं। अ बिगिनर, नोवाइस। ग्रीन हॉर्न शब्द भी बोला जाता है। नियोफाइट एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियोस। रोकी शब्द भी बोला जाता है। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स of the word tyro. Let's look at the usage. She is a good musician. However, at 11 years, she is still a tyro and has to learn a lot and has a lot to learn. Most of the people in the class were tyros like me. So they were novices. They were new entries. यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। Tyro means pugilist, fancier, beginner. Beginner is the correct answer. Bucolic शब्द का अर्थ होता है related to countryside, villages से associated जो चीज़ है। rustic भी बोला जाता है, उसके लिए हम bucolic शब्द का प्रयोग करते हैं। And pugilist शब्द का अर्थ होता है boxer, a physical athlete. उनके लिए हम pugilist शब्द का प्रयोग करते हैं। A professional boxer, a fighter, a gladiator. Gladiator भी बोला जाता है, उसके लिए हम pugilist शब्द का प्रयोग करते हैं। Let's look at the usage of the word pugilist. His pugilistic ambitions were crushed when he lost his physical strength due to the disease. So pugilist is a boxer, a professional athlete. And यहाँ पर we've seen the usage. Moving on to the next word, umbrage. Umbrage शब्द का अर्थ होता है whenever you are taking offense or annoyance. As you can see in the image over here, when you take offense or get annoyed, तो यहाँ पर it means to be offended or feeling insulted, to get nose out of joint. ये बहुत ही important synonym है umbrage का. Whenever you're feeling, you are feeling that you've been offended or insulted, we're going to be using the word umbrage. Let's look at the usage. She took umbrage at the slightest suggestion of disrespect. So that is umbrage. Surly शब्द का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा rude हो जाता है, hostile हो जाते हैं, unfriendly है, bad tempered है, तो उसके लिए हम surly शब्द का प्रयोग करते हैं। Bad tempered, grumpy, hostile, unfriendly or rude. That's the meaning of the word surly. Let's look at the usage. The surly receptionist told us that we had to wait outside in the rain. As you can see in the image, when someone is rude, unfriendly, hostile, then we are using the word surly. Moving on to the next word, modish. Modish शब्द का अर्थ होता है contemporary, fashionable, stylish. उसके लिए हम modish शब्द का प्रयोग करेंगे. So someone who's fashionable, someone who's stylish, someone who's contemporary, उनके लिए modish शब्द का प्रयोग किया जाएगा. Let's look at the usage. She is a modish writer. That was one of the strikingly modish gowns that actresses wear to award shows. So that is when we're using the word modish. In case of any doubts, you can mention that in the comment section.